please ignore the way I look. It's because tomorrow I have my फर्स्ट प्रीबोर्ड ऑफ माई कौन सा सब्जेक्ट भाई है फिज़िक्स का। मैं कौन सा सब्जेक्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से मतलब सुबह से भी नहीं, बट या आई एम स्टडिंग एंड आई एम सो ऐसे सैचुरेटेड, बट इट्स ओके। एंड आई हैव ऑल्सो कॉल्ड माई फ्रेंड कि तेरे कितने चैप्टर हुए, उसमें ऑल्सो 5 चैप्टर हुए। मैंने कहा मेरे एक भी नहीं होता ठीक से। तो अगेन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमोटिवेशन एंड ऑब्वियसली डिमोटिवेशन अब हम वापस पढ़ने वाले हैं। विद मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वाली जो ये वीडियो है इसमें मैं लाइट ख़त्म कर दूँ। लाइट 3 चैप्टर, रिफ्रैक्शन, लेंस वाला और स्पेक्ट्रम वाला। मेरा ऐसा ये है कि भाई एटलीस्ट हो जाएगा, हम वही करने वाला है। एंड या गाइस दैट इज़ बिग स्टडी विद मी एंड भाई प्लीज़ इग्नोर द वे आई लुक गाइस, प्लीज़। मैं मुझे पता है कि मैं हर दिन भी क्या इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं रखती, पर आज मैं सच में बहुत बेकार लग रही हूँ, बट या इट्स ओके। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि मैंने नहा भी नहीं लिया सुबह से, क्योंकि और आज मैं छुट्टी ली थी तो मैंने नहाया नहीं, बिकॉज इतनी टेंशन हो रही है। बट क्या कुछ हो, बट इट्स ओके, इट्स नॉट ओके टू बी ओके, बट लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली इट्स ओके नॉट टू बी ओके। लेट्स स्टार्ट। इनफ ऑफ माय यप बट So there are few people who live on rent, तो वो लोग आए थे और मुझे कपड़े निकालने ऊपर यहाँ, और मैं यहाँ पढ़ रही थी एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग। इट्स ओके गाइस, लेट्स गेट बैक। ट्रायंगुलर प्रिज्म एंटर कर रहा है क्या ABC? इट गेट्स डेविएटेड से बाय एन एंगल, ये हो रहा है टुवर्ड्स द बेस BC के साथ हो रहा है द फर्स्ट सरफेस AB द प्रिज्म एंड ट्रैवल स्ट्रेट एज OR इनसाइड द प्रिज्म। द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ the angle of incidence and the refraction, the refractive index of the glass with respect to wire on striking the surface AC. The ray OR gets further deviated say by an angle. Oh my god, towards the base BC and travels straight as R is outside the prism. The angle of deviation depends on angle of incidence for the second surface, which depends on angle of prism and the diffractive index of the air with respect to glass for the emergent ray R as the total deviation and with respect to incident ray PQ. Oh my god, तुरुना मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। The angle between the emergent ray and the direction PL of the incident ray PQ is known as, this is nothing else but deviation का साइन है ये। deviation is equal to deviation 1 plus deviation 2। आई शपथ मला काय पण नाही समजत तर काय करायचं। the total angle of deviation thus depends upon the following 3 factors plus the total angle of deviation outward. The angle of incidence at the first surface, angle of prism, the refractive index of the material of the prism. Since the refractive index depends on color wavelength of the light, so the angle of deviation also depends on the color or the wavelength of the incident ray. In chapter 4 we have discussed about light, ये सब हमने पढ़ रखा है यार, ठीक है। डिपेंडेंस अभी देखो, using an attack ray produces white light, electromagnetic डेविएशन बता रहे थे तुम। देखो यही है डेविएशन, ये अच्छी इम्पॉर्टेंट है जो डेविएशन है ना प्रोड्यूस्ड। वी है वी इम्पॉर्टेंट है। सो
So it is very very important, and I'm feeling so cold. We can keep it like this, because if I study like this, I don't feel like I'm studying, you know. That's okay. हाँ, तो यहाँ हमने पढ़ा कि the refractive index of material represents the refractive index depends on color और wavelength. ये डिपेंड करता है कलर और wavelength पे, ठीक है. नेक्स्ट कलर इन वाइट लाइट, पर ये पढ़ेंगे. हाँ, डिपेंडेंस ऑफ डेविएशन ऑफ कलर और लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव सेम स्पीड. Light of different colors have same speed in the air but different speed in medium. Then if the light entering a prism is not of a single color, it is a mixture of several colors, then the emitted beam to have different colors arranged in a different ordering. It is so because the speed of light in a transparent medium decreases with decrease in wavelength. It is so because the speed of light decreases in a transparent medium decreases in the wavelength. अब wavelength कैसा कम होता है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट भी कम होता है. अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से पता है क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि यार मेरा ये वाला चैप्टर थोड़ा वीक है, मुझे पढ़ना है. Yeah. Since the refractive index for glass, the material of prism increases with increase and decreases the wavelength of light. Therefore, the deviation caused by the prism also increases with a decreasing wavelength of light. It is visible light violet. So, in visible light, violet colors wavelength. अभी violet का क्या है, 4000 है, 4000 है, ठीक है. wavelength range and is deviated with the most red color. red color का wavelength क्या है, 8000 है, which has the highest wavelength. red has the more wavelength, violet has the less wavelength. and ठीक है, तो wavelength डिपेंड, wavelength इंक्रीज हो रहा है तो लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी. तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर है, वॉयलेट में होगी, है ना, सॉरी रेड में होगी. फिर है ना. I don't think I'm right. I don't know why I have a doubt. हाँ, मैक्सिमम का है रेड लाइट में स्पीड की लाइट मैक्सिमम है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम में मैक्सिमम फॉर वायलेट, एंड दिस फॉर रेड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है, स्पीड ऑफ लाइट वो ज़्यादा आएगा. इन द गिवन स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम वायलेट एंड दैट ऑफ वायलेट इज लीस्ट. देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम फॉर वायलेट एंड लीस्ट फॉर रेड. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड का कम है, स्पीड ज़्यादा है रेड का, और इसका जो वेवलेंथ भी ज़्यादा है, और यहाँ पे भी वोल्ट ऑफिस मिल रहा है. ऐसा करेंगे तो ठीक है. कलर्स इन अ वाइट लाइट विद wavelength and frequency range. The white light emitted from source consists of light at different wavelengths. The light of different wavelengths produces sensation of different colors in the retina होता है, so we perceive them as different colors. The prominent colors in white light are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Different colors differ in their wavelength. In fact, wavelength is a characteristic of color irrespective of their origin. Light of the same color obtained from different sources will have the same wavelength. In other words, color is a subjective property of light related to its wavelength. A table below gives the range of wavelength and frequency for the light of different colors present in the white light. Note that there is no sharp boundary between different colors. Dispersion of white light through a prism and formation of a spectrum. Dispersion होता है. Sir Isaac Newton, while studying the image of a heavenly body formed due to refraction of white light by a lens, found that the image is colored. As he thought that the colored image is due to some effect of the lens, he then repeated the experiment with carefully polished lens, but the image was still colored. Newton then concluded that the fault is not with the lens, but there is something in the nature of white light itself is due to the image colored out its edges. To investigate it further, he formed another experiment with prism. देखिए हमारा आइजैक न्यूटन कितने बुद्धिमान इंसान है.
शाना 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 का मतलब होता है टू लेवल. Now let's study the Newton's experiment. वैसे न्यूटन के लॉ और तो नहीं है यहाँ पे जो 9th में थे. Thankfully, Newton allowed the white light from the sun to enter into a dark room through a small aperture in a window and placed a glass prism in path of the light rays. The light emerging out of the prism was received on a white screen. Again, it was received on a white screen. On the screen, a color patch like that of rainbow as shown was obtained, was termed to as spectrum. So screen के ऊपर there were 7 colors like a rainbow, and that 7 colors were called as what? Was called as क्या? Spectrum. अच्छा जारी मैं भी वन शॉट देखूँगी यार शिलेंद्र सर के. मतलब आफ्टर रीडिंग माई होल सिलेबस, पूरा सिलेबस आया है कल के एग्ज़ाम में, तो आफ्टर आई विल डन विथ माई फुल सिलेबस मैं शिलेंद्र सर के लेक्चर देख रही हूँ. शिलेंद्र सर लेक्चर के नोट्स पक्का बनाऊँगी मैं, कह रही हूँ. मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है अभी नोट्स बना रही. एक दिन एग्ज़ाम पे एक दिन टाइम है, तो मैं कल जाकर वही नोट्स रेफर करता हूँ. बढ़िया. तो लाइट में मर्जिंग ये वहाँ स्पेक्ट्रम जो वहाँ पे पढ़ रहा है ना वो स्पेक्ट्रम है, ठीक है. और डिस्परेशन में ही छोड़ा था. फिर डिस्पर्शन क्या है? जो स्प्लिटिंग आउट ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डिस्परेशन. और वहाँ जो पूरा इस पर बन रहा है वो क्या है? वो है हमारा स्पेक्ट्रम. स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म द ऑर्डर ऑफ कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम इज बिब्योर. भाई बचपन से पढ़ रहे हैं ना नीचे से ऐसे बिब्योर. इतना तो पता होगा, ये सबको ही पता होगा यार, ये तो बचपन से पढ़ रहा है. But yeah, this order of colors in spectrum can easily be remembered by the word biblior, which is known as black. Concluding from the above experiment, Newton concluded that white light consists of 7 prominent colors. इस समय ये पता चलता है कि white light के अंदर कितने कलर होते हैं? 7 prominent कलर होते हैं. वो होता है बिब्योर, रेनबो वाले कलर्स, ठीक है. और each color corresponds to a small range of wavelengths. There's a range of mixtures. Thus, white light is a mixture of large number of wavelengths. It is a polychromatic in nature. अभी हम definition पढ़ लेते हैं एक बार. The phenomenon of splitting of white light by prism into its constituent colors is known as dispersion. Spectrum on passing white light through prism, the band of colors seen on screen, जो screen पर obtain हो रहा है उसको हम spectrum बुलाते हैं. Cause of dispersion of white light and formation of spectrum. The cause of dispersion of white light is that light of different wavelengths can travel with a different speed in medium. When white light enters the first surface of prism, lights of different colors due to their different speed in glass gets deviated to different angles towards the base of the prism. This dispersion or splitting of white light into its constituent colors takes place at the first place of the prism. Violet color is deviated the most, while red least है, violet सबसे ज़्यादा है, ठीक है. Violet color is deviated the most, while red is deviated. Therefore, the light of different color present follow different paths prism and then strike the second surface. On the second surface, only refraction takes place only from glass, and different angles are deviated. Angles due to their different angles of incidence and the surface. Here again, violet is deviated the most and red is least. As a result, the colors get there for the separated from the refraction at the second surface. The light emerging out of the prism thus has different colors that speed out from the sun. Dispersion of white light occurs only at the first surface of the prism. Deviation of light rays occurs at both the surfaces of the prism. A prism does not produce colors, but it only splits the whites, splits the colors into its constituent colors. जो भी है बिब्योर. यहाँ ये कुछ क्वेश्चन भी हैं आप सबके लिए नहीं, हमारे लिए. तो अगर आप ऐसा कर सकते हो इस बार नाइस से 10 ग्रेडर, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी है. प्लीज़ मेरे को सच दादी मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है अभी. तो मुझे बन रहा है BIBGYOR बिब्योर. सब
Okay guys, never mind, it's okay. अभी हम पढ़ेंगे एक लास्ट टॉपिक and we'll be done with this chapter. I'm so but yeah, after I'll be done with this chapter, I'll be attending the lecture on this chapter, making its notes, learning it. That is what I'm gonna do. मैं सब इतना कल के एग्जाम में जाने वाली हूँ. न्यूमेरिकल्स नहीं है. न्यूमेरिकल्स नहीं है. वैसे मैं वेरी पर देखा तो न्यूमेरिकल्स है. ज़्यादा नहीं है बट यार न्यूमेरिकल्स है भाई. मैंने सोचा था कि मैं PYQ करके जाऊँगी. PYQ करके जाऊँगी. सिलेबस खत्म नहीं हुआ है. मैं PYQ देख रही हूँ. एंड प्लीज़ इग्नोर माय बाल जो भी दिख रहा है आपको. बताया मैंने आपको. बट आई विल हैव अ बाथ रात को सोने से पहले आकर इन द इवनिंग टाइम्स. कुछ होगा मैं कल सुबह तो बिल्कुल ही नहाऊंगी. आई एम श्योर. सो आई टेक दैट नाउ. इट्स ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये हम पढ़ेंगे अभी. लेट अस बिगिन. ठीक है. ठंड है बहुत ठंड है. इट्स सो cold. I don't know who says that. And like I come from tropical type of climatic area पे रहती हूँ. Guess where do I stay? Because tropical monsoon type of climate. होता है यार. हाँ होता है. तो मैं कहाँ रहती हूँ guess करके बताओ. If you are an Icse then और अब पता होगा कि क्या है. because ज्योग्राफी उन्होंने पढ़ रखा है. एंड थैंकफुली मेरी ज्योग्राफी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है. एक्सेप्ट दैट टोपोग्राफी वाली चीज़ जो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ स्टडी. पढ़ना चाहिए मुझे. लेट्स गेट बैक. क्या कर रही हूँ तब से. लेट्स गेट बैक. ठीक है. Electromagnetic spectrum classification. Till now we have limited ourselves to the spectrum of white light which lies between the red and violet regions. Our eyes sensitive only to this range of wavelengths. This spectrum is visible spectrum and it is only a very small part of entire electromagnetic spectrum. Experiments show that spectrum of radiation from the sun is limited not only between the violet and red extremes, but it extends on either side. Beyond these extremes of which our eyes do not respond, the part of the spectrum beyond the red extreme and violet extreme is called as invisible spectrum. तो इससे beyond भी कुछ है जो बस दिख नहीं रही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आएंगे देखो हमारे रेजेस. अभी एक्सरेज आए. फर्स्ट आएंगे गामा रेजेस, फिर आएंगे एक्सरेज, फिर आएंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. ठीक है. इतने ही क्या. अच्छा फिर आएंगे विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. साथ है. इन्हें साथ पढ़ना है. ठीक है. अच्छा मतलब आई थिंक माई हेयर इज लिटिल मेकिंग मी अभी जल्दी से ख़त्म करते पढ़ते हो. टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे. बस ठीक से बैठनी थी. ठीक है. The waves of wavelength longer than the red light. कैमरा में. ठीक है. longer than the wavelength. The waves of the wavelength longer than the red the spectrum is increasing whatever wavelength are infrared radiations. Microwaves, radio waves, while the waves of wavelength shorter than the violet part of spectrum is decreasing order value. Ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, UV radiation from the electromagnetic waves which travels to the same atom. Can you not understand me? How speed?
use not a spoon. Like a small reading of it. Perfect. Because मुझे वीडियो देखना है. मुझे लेंस वाला बहुत खतरनाक लग रहा है. क्यों? मैं बहुत डरती हूँ लेंस चाकू से.
this is F1, it's not F1. In this is the image. Yeah. For maths exam, I have one day holiday. नहीं कैसे होगा, मैं कैसे फ्री हूँ और ये जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मुझे नहीं पता ये इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, मुझे तुमको सूटा मेरे बाकी सब छोड़ रहे हैं. This is quite a bit important thing. याद करना है. ये करना है. सक. ऑब्जेक्ट कहाँ है मुझे पता होना चाहिए. इसमें इस चैप्टर में पूरे इस पार्ट में सिर्फ ये वाला टेबल पढ़ना है बस. ये वाला पढ़ना है बस. ये वाला पढ़ना है बस. मोर है
कुछ नहीं है, बस फार्मूला है, फार्मूला लगाओ, लीनियर लेंस फार्मूला क्या करना है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या करना है, पावर का लेंस है, बस भाई कुछ नहीं है इसमें भी। तो बस ऐसी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे वाला मैग्निफिकेशन ये मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई डोंट थिंक का ये पढ़ते हैं। मैं सब कुछ टाल ही रही हूँ, प्रभु भी काम है ना। ये एक पढ़ के ऐसा हुआ ना यार, आई विल जस्ट स्टॉप दिस वीडियो, मतलब शूटिंग स्टार्ट हुई। ये एक नहीं, मतलब ये चैप्टर बना है बट ये वाला जो चैप्टर है ये वाला मेरा अच्छा खासा हो चुका है, बट हो नहीं चुका है, बट आई रियली वांट टू गिव इट लाइक अ सेपरेट गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मैं यहाँ शूट भी ना करूँ, बट यार ये वाला तो कर लेते हैं। कितना टाइम लगना नहीं इसे याद करेंगे, और कुछ ही नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है। F2 beyond F2 between F2 and 2F2 between F1 and F2 it is beyond F2 and it is at F1 it is at infinity between the lines and F1 on the same side behind object highly diminished same side magnified highly magnified ये भी highly diminished है diminished सा टाइप का आएगा diminished भी है diminished है real inverted real nature of the real inverted sound the position of the object at infinity के पास at F2 and beyond 2F1 it is between F2 and 2F2 when it is at 2F1 it is at 2F2 when it is at 2F1 it is at 2F2 between F1 and 2F1 it is beyond 2F2 ठीक है, it is at F1 it is at infinity between the lines it is at the on the same side behind the object ठीक है, और when it is at infinity it is like highly diminished beyond the 2F1 है ना, तब ये डिमिनिश्ड होता है, सेम साइज होता है, मैग्नीफाइड होता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है, फिर मैग्नीफाइड होता है। ये आपको याद रखना, सब में रियल इन्वर्टेड होता है, सिर्फ वर्चुअल अप्लाइड लास्ट में होता है जब हम लेंस वाला वो यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन होता है एज अ बर्निंग कैंडल इन अ कैमरा लेंस इन अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इन अ स्लाइड प्रोजेक्टर इन अ कॉलियोमीटर स्पेक्ट्रम एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सब अभी मैं लिख के प्रैक्टिस करूँगा, मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे है तो मैंने फर्स्ट का चैप्टर का अच्छे से करा, बट स्टिल आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ दैट आई डू इट। डर तो लग ही रहा है, देखेंगे। Then this is that is for convex, this is for concave. When it is at infinity, at the focus on the same side of the lens at any position between the
infinity and the optical center, between the focus and the optical center on the same side of the lens on the object, virtual and upright, virtual and upright, यहाँ पे हमेशा erect, यहाँ पे erect नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे virtual और upright होता है, यहाँ पे inverted और real होता है, virtual और upright यहाँ पे highly damaged image होता है, ठीक है, ये तो याद रखना है, ज़्यादा कुछ भी कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, ये पता नहीं लास्ट में अगर हो सकता है तो यार ये कुछ डायग्राम्स भी मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूँगी, टाइम आई एम श्योर मुझे टाइम मिलेगा, बट आई डू इट, लाइक आई एम श्योर कि मुझे ये चैप्टर मुझे करनी है, तो अब चैप्टर कर लेंगे। इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज कैन बी रियल एज वेल एज वर्चुअल, it is real if the object lies beyond the focus, it is real if the object lies beyond the focus, while it is virtual if the object okay, we are a little done with this, that one also. अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़ेंगे थोड़े बहुत, इसके तो सारे नोट्स पढ़ेंगे, चलो सर के जो वन शॉट है वो नोट बना के बोलूँगा, मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से मेरे पढ़ने का मन नहीं है, बिल्कुल मैं लिख के पढ़ के थोड़ा बहुत दिमाग में कुछ आएगा। हम अभी लेंस फार्मूला बाहर कर पढ़ते हैं, उसके साथ ही मैंने पढ़ रखे हैं, मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं। 1/u प्लस 1/v, सॉरी 1 क्या कहना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, लेंस फार्मूला होता है ये, ठीक है, क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v, 1/u माइनस सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, डेरिवेशन होती पढ़ना, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन विच इज़ लेंथ ऑफ द इमेज प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट का लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। पावर ऑफ द लेंथ, जिनमें पावर फाइंड करना होता है ना, पावर शक्तिमान, जब हम 1/फोकल लेंथ इन मीटर लेते हैं, हमेशा इन मीटर लेते हैं अपने यहाँ, तो 1/f p is equal to 1/f, that's all about this। यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं नहीं, मैग्नीफाइंग पावर है, कुछ है नहीं, मेरे पल्ले का नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, बट ओके, इट्स ओके, we'll give it a good start, we'll give it a good, we will do it, तो ये वाला तो बन गया है, हम आप दोनों रियल इन्वर्टेड विजुअल, वंस गॉन थ्रू माई सिलेबस, अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है भाई, मुझे वो भी नहीं करा ना, सच बता दूँ मुझे रिविजन की ज़रूरत है, द अमाउंट ऑफ रिविजन की, द फॉर्मूला शीट जो मैंने बनाई है, मतलब हाँ रिविजन की ज़रूरत है यहाँ पर भी, क्वेश्चन की यार, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ी मारेंगे तो बहुत ज़रूरत है। मेरी पहली वाली चैप्टर जो है इसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, वो थोड़ी मुझे अच्छी लगती नहीं है, अभी नहीं लगती है, तब लग रही थी, पता नहीं तब, तो मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करनी है, वो मुझे लगता है हो सकता भी है, पर हाँ मैं पढ़ लूँगी यार, मैं नहीं होगा मुझे बहुत ज़्यादा ये तो फॉर्मूला जो याद हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिखाई दे रहा है, इनको आओ ही मत, अच्छा
से भी AC करंट है, DC करंट है। ओह माय गॉड गाइस, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। जितना हमसे हो सकता है हम उतना करके जाएंगे बस। इसके लेक्चर देखने की सख्त ज़रूरत है मुझको अभी। तो अभी हम अगर मैं लेक्चर देखूँगी ना, पहले स्पेक्ट्रम का लेक्चर देखना है मुझे। ठीक है, स्पेक्ट्रम होने के बाद मैं ये वाला देखूँगी लेक्चर, ये वाला। ठीक है, एंड आई विल बी डन विद दिस एंड एज सून आई विल बी डन विद दैट। इसमें तो कहीं मेरे 9 तो बज जाएंगे, 9 9 समथिंग, एंड देन आफ्टर डन 9 then I will doing this अच्छे से कोर्स आफ्टर। ठीक है, इसी लेते हैं 1 मिनट एकदम अच्छे से। साउंड वाला नहीं मेरा अच्छे से लग रहा है, वो करना है। सिक्स 7 ये वाला तो मैंने सिर्फ नहीं देखा है, इसका भी लेक्चर देखना होगा मुझे। बट यार लेट्स होप यार, कुछ नहीं कर सकते यार, हम हमारे तरफ से बेस्ट दे सकते हैं एंड वो दे रही है मुझे लग रहा है। And it's okay, enough of my this. Now I'll be watching lecture. By the way, this is my मैंने बनाया एक छोटा से यहाँ पे धागा बांध के नोट्स बस बढ़िया। ये साउंड के नोट्स हैं, बड़े बहुत कल स्कूल में पढ़ने के लिए। Some diagrams again for tomorrow in the school. I should know how to do diagrams and also that is the thing. यहाँ पे begin diagrams हैं कुछ। अभी यहाँ से मैं स्पेक्ट्रम लिख के स्पेक्ट्रम के नोट्स जो भी लिखे वो नोट्स आई विल टेक इट फ्रॉम द बैच, आई विल टेक इट फ्रॉम लाइक दैट वन शॉट वीडियो है ना, तो लास्ट ईयर के हैं फिर इस ईयर के हैं जो अपलोडेड हुए इस ईयर के, मैं उस ईयर के लूँगी, जो नहीं हुआ है वो लास्ट ईयर के लेंगे। क्यों बात है ऐसे ही बोल रही मैं, कैमरा उठा तो उसका मैं ऐसा लूँगी। तो बस यार दैट इज़ इट। प्रोबेबली आफ्टर दिस आई विल नॉट बी शूटिंग स्टडी विद मी। मैं ऑलरेडी आज 3 स्टडी विद मी शूट कर चुकी हूँ, कुछ नहीं सब पढ़ना होता है। इट्स नॉट इवन सो मच हाई एफर्ट थिंग इट इज़, बट या इट्स ओके। सो नाउ विल बी डूइंग नाउ अ लिटिल बिट ऑफ क्या ये मैं ये सो विल बी डूइंग थोड़ा सा स्पेक्ट्रम करेंगे यार जितना हमसे हो सकता है। फिर या आई अपडेट यू गाइस कि कल का एग्ज़ाम कैसा गया एंड ऑल दैट इन माई केमिस्ट्री स्टडी विद मी। और केमिस्ट्री स्टडी विद मी तो मैं बताऊँगी ही, अगर मैंने शूट करा तो बताऊँगी, अगर मैं नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली आई विल टेल इन माई ब्लॉग बिकॉज आई एम शूटिंग यू नो वो क्या कहते हैं यार, हाँ आई एम शूटिंग अ ब्लॉग गाइस आफ्टर लॉन्ग टाइम। So yeah, stay tuned for that also and subscribe for more and thanks for watching. See you next one. Bye. Thanks so much. Bye bye.